Good morning, everyone. Now let's start with the question number 19. So what is given in the question? A trust fund has 30,000, okay, that must be invested in two different types of bonds. The first bonds pays 5% interest per year, and the second bonds pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide this 30,000 among the two types of bond. Okay, among the two types of bond, the trust must, if the trust fund must obtain the annual total interest of 1800. Okay, now listen, guys. So this is the annual total. What? This is annual total interest. Yes. So can you tell me what will be the order of this matrix? Guys, what will be the order of the matrix? This matrix. Yes. It should be the total. It should be one cross one. Yes. It should be one cross one. Then I. Because it is a total. Total means there will be one element and there will be only one row. Okay. One row and one column. So whenever you have to evaluate total something, now it must be the one cross one matrix. Okay. Now suppose we have 30,000. Okay, and we have to invest into two different types of bond. I'll take the sum amount in the first bond and the sum amount in the second bond. So can we say that if I invest X amount in the first bond, the 30,000 minus X amount in the second bond. Okay, where first bond give the 5% interest and second bond give what? 7% interest. So how to form this thing in the multiplication? But we know that the output, if you solve the first problem, we know that the output we have here, the output we have as 1800. 1800 means this is the one cross one matrix. One cross one matrix. So how can we form one cross one matrix? Now look at there, this part. So if I want to obtain one cross one matrix, so I have to take one row from the first matrix. One row from the first matrix, and I have to take the one column from the second matrix or second matrix. Yes, this part is clear. Hello. Then if I want to one cross one matrix, I have to take the one row from the first matrix and one column from the second matrix. That is one cross one. And we have to make this part and this part is similar. तो कितना करेंगे? हमारे पास कितना पार्ट है? एक और दो पार्ट है. तो can I take two here and two here also? So we have to form basically one cross two matrix and two cross one matrix. One cross two means what? The one row and two column. Okay, one row and two column. Just a second, I have to enlarge this because the amount जो लिखना है वो थोड़ा सा बड़ा है. So one row and two column, it means that the first amount will be the X and the second amount will be the 30,000 minus X. Clear with this? And what about here? Two rows and first column. Two rows and first column means what? On the X, it is like he is getting that for 5%. Okay, कितना मिल रहा है इसको? 5%. What about here? The for the second 7%. Now if you multiply this, you will get the total. So how to multiply the first row, first column? It means that the X into 5% plus 30,000 minus X into 7% equal to कितना हो जाएगा बोलो? This matrix should be equal to कितना हो जाएगा? It will be equal to 1800. Okay. Now if you solve this, okay, आप बाहर ला करके इक्वेट करके इनको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा? 5x upon 100 plus 30,000 into 7 upon 100 minus X into 7 by 100 equal to 1800. Now can we cancel this? 20 from here, 20 from here. So 5x minus 7x by 100 is basically minus 2x by 100. That's equal to, not equal to, 2 minus 2x by 100 minus, or sorry, plus. Now if you multiply this, you will get 2 1. Okay, please. 2
1 कितना हो जाएगा? in the first में कितना दे रखा है? The first bond 5% and the second bond is 7% interest. So all this thing is clear. Okay, no issue. So 2 1 कितना हो जाएगा ये पे उस पे? 00. Yes, these two is 0. Okay. After that equal to 1800. Now if you solve this further, can I write down? Can I take this part that side? So 2100 minus 1800 equal to 2x upon 100. So what is 2100 minus 1800? कितना होता है? जल्दी बताओ. What is the answer? 300. 300. So 300 equal to 2x upon 100. So 300 into 100 equal to 2x. Okay. And from here we can say that 2x equal to कितना हो जाएगा? 30,000. So x equal to 30,000 divided by 2. So x equal to 15,000. Means we have to invest the 15,000 in the first type of bond and the 15,000 in the next type of bond. So this will be the answer and this will be the matrix formation for that. Okay. Now if you want to form the basically matrix, basically what we have to calculate here, I mean find the interest using matrix determine the how to divide the. Okay, done. आप इस तरह से निकाल सकते हो. X का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15,000. Means you have to invest half of the amount in the first type of bond and half the amount in the second type of bond, so that you can obtain the 1800 as interest, total interest. Now, with the help of same method, you can solve this. Yes. Should I try? और आप लोग करोगे? जल्दी बताइए. Look at the question number 20. Now, so the bookshop of particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, and 10 dozen economics book. Their selling prices are 80 rupees, 60 rupees, and 40 rupees each, respectively. Find the total amount. What we have to find out, guys? The total amount. This is the very important. Total amount means, can anyone tell me what is the meaning of total amount? Means we have to form 1 cross 1 matrix. The bookshop will receive from selling, okay, all the books using matrix algebra. All the books means using matrix algebra. So if you want to form, if you want to calculate 1 cross 1 matrix, okay, out of 3 something, मतलब 3 order, third order का, so how can we calculate? Means we have to take the first, or we can say we have to form one row from the first matrix and one column from the second matrix. तो आप मुझे बताइए हम 3 by 3 के ऑर्डर में किस टाइप का मैट्रिक्स लेंगे, ओके, ताकि मुझे 1 by 1 का मैट्रिक्स मिले. बताओ. We have to choose 1 cross 3 first, then we have to choose 3 cross 1 first, guys, so that we will get the 1 cross 1 matrix. This is the method. Are you following all this, guys? You have the order right now 3, okay, 10 dozen hai, 8 dozen hai, okay, and 10 dozen book economic books. You have to follow the which method? You have to follow the this method कि हमारे 3 के ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स बनाना है, ओके, और फाइनल आंसर हमारा 1 क्रॉस 1 में चाहिए. मींस हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मतलब एक रो एसोसिएट होना चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स का एक कॉलम एसोसिएट होना चाहिए, लाइक दिस. ओके, अभी क्या करेंगे? फर्स्ट 1 क्रॉस 3 मींस व्हाट? तो 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम मींस दिस, ऐसा आएगा. तो पहले में कितना बुक है? 10 डजन केमिस्ट्री बुक. यस, सो कैन वी से दैट 10 into 12 कितना हो जाएगा? एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं. तो कितना होता है? 120 केमिस्ट्री बुक. यस, दिस इज द केमिस्ट्री बुक. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 8 डजन फिजिक्स बुक. तो 12 8 into 12 कितना हो जाएगा? 96 फिजिक्स बुक.
yes, and 10 dozen economics books, 120. Clear with this? And the corresponding prices are 80 rupees, 60 rupees, and 40 rupees. Now you tell me, if you multiply this, what you will get? You will get 1 cross 1 matrices, and what will be the total answer? The first row, first column, it means that 120 into 80, okay, plus this into this, 96 into 60 plus 120 into 40. Now you tell me what will be the final answer. अब आप इनको बाहर भी निकालना चाहते तो बाहर निकाल लो. So the total amount you can write on, total amount will be equal to, guys, कितना हो जाएगा total amount यहाँ पे? 120 into 18, okay, plus 96 into 60 plus 120 into 40. Now you tell me the answer for this question. कितना होगा? 160 आ रहा है. That I don't know, लेकिन आप इनको कैलकुलेट करके देखो. 9600 आफ्टर दैट कितना हो जाएगा? 6 कैरी ओवर इज 3 and this 5710 plus 4800. So what will be the answer? इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 0 6 68 2 yeah, this is the amount. 20,160 rupees, the total amount. Everyone got this? Same? Yes? Now look at the question number 21, 22. What is it given in the question number 21 and 22? Assume X, Y, Z, and W and P are the matrices ordered 2 cross N, 3 cross N, 2 cross P, N cross 3, and P cross K. This will choose the correct answer in exercise 21 and 22. So the restriction on N, K, and P so that Py plus Wy will be defined here. क्या होगा बताओ? Now, what is the order of P? Order of P कितना दिया है? What is the order of P? P cross. Order of the matrices P is P cross K. P cross K. Okay. Now, what is the order of Y? Y का order क्या है? Order of Y is 3 cross. 3 cross K. 3 cross K. Now plus. What is the order of the W? Order of the W? N cross 3. Okay. And what is the order of that? What Y again? Order of the Y? 3 cross K. 3 cross K. Now listen. For this multiplication, K should be equal to 3. Yes, so we got first expression K should be equal to 3. For this multiplication, here we can say that the multiplication is possible, there will be no issue. Okay, after that, if you multiply, you will get a matrix Py of order कितना आएगा? P cross K, सही है? Plus ये तो K का वैल्यू 3 हो गया ना, तो P cross you can say either you can say that क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ पे K बोलो या 3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Plus, if you multiply this and you will get the final matrices Wy of the order N cross K. N cross K. Now you tell me here if the addition of the matrix is possible when the order will be the same. Order क्या होनी चाहिए? Same होनी चाहिए. अभी बताओ यहाँ पे ये basically क्या है? P cross 3 है और ये basically क्या है? N cross 3 है. Yes. तो ये कब possible है? ये addition कब possible है? When P should be equal to what है? The next condition is P should be equal to N. So what will be the answer? Answer will be the first. Okay, the K should be equal to 3 and P should be equal to N. Then we can say that यहाँ पे addition, multiplication दोनों possible होंगे. Siri, you got the concept?
नहीं सर, वो लास्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई करके और ही समझा सर। 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बेटा। k कितना है? k 3 है ना, तो मैंने सिर्फ यहाँ हाँ k सर, का वैल्यू समझ रखा गया। और यहाँ पे k का वैल्यू मैंने 3 रखा। अब दोनों का मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब ये और ये दोनों सेम होंगे। तो आप देखो कॉलम तो इनका सेम है, बट इनका रो सेम होना चाहिए, मतलब p शुड बी इक्वल टू m। क्लियर? हेलो? यस सर। यस। Now, what about here? If n equal to p, then the order of the matrix is 7x minus 5z. Doesn't matter. There will be no any issue with this, the constant term, the 7 and 5. उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है x से। What is the order of the x? Order of the x कितना है? 2 cross n minus the 5. What is the order of z? What is the order of z, guys? Z is m cross 3, yeah? No. 2 cross p. 2 cross p. 2 cross p. Okay. So the question is, if n equal to p, n के जगह कितना है? p है. Then the order of the matrix 7x minus 5z is. Okay. तो अब आप बताइए मुझे यहाँ पे ये दोनों का मैट्रिक्स तभी मतलब ये हो सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है जब ये इक्वल इसके बराबर हो और ये इक्वल इसके बराबर हो। तो ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन जो n है किसके बराबर है? p के बराबर है। इफ n इक्वल टू p मींस दोनों क्या है? इक्वल है। तो इधर आई कैन राइट ऑन व्हाट? n और वी कैन राइट ऑन द p, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस n के इस p के जगह मैं n लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 7x minus 5z 2 क्रॉस n। तो दोनों का जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सपोज दैट इज ए मैट्रिसेस, उसका ऑर्डर कितना रहेगा? दैट ऑर्डर इज 2 क्रॉस n और द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी द 2 क्रॉस p। तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसका कितना होगा? ईदर यू विल गेट द 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, दोनों का मतलब सेम है। p क्रॉस 2 नहीं हो सकता, 2 क्रॉस इज इंपॉर्टेंट, द 2 क्रॉस 1 इज ओनली हियर और किसी में है नहीं। द 2 क्रॉस n विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सिर्फ आपको बेसिक कांसेप्ट लगाना है कि दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम रहना चाहिए, बस सब्सट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है क्या करना होता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ द मैट्रिसेस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज matrix, it is basically denoted by, let's assume that suppose we have the matrix A, the A dash or A T. Okay, what is the meaning of transpose? Transpose means basically it means that it is a transpose of matrix means it is a matrix. It is a matrix in which rows get interchanged with column. Rows get interchanged with columns. That is called as a transpose of the matrix. Okay, nothing else. Means you have to interchange row into column and column into row. So that is the basically called as transpose of the matrix. Let's consider one example here. Example, suppose if I have a matrix A equal to 1 2 A B. Okay, now I have to find out the transpose of this matrix A, that will be the A dash, and it will be equal to, क्या हो जाएगा? आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, मींस रो को आपको इंटरचेंज करना है कॉलम में, मींस यू हैव टू मेक फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। सो कैन वी से दैट फर्स्ट कॉलम इज 1 2, यस, एंड द सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दीजिए, कैन वी से दैट हियर 1 सॉरी A B, second row into second column A B. So this will call as the transpose of the matrix E. Okay, now so if I talk in mathematical form और बहुत अच्छी तरह से आप यदि एलिमेंट्स के बारे में बात करोगे, तो suppose if you have a matrix A, that will be the collection of Aij, then what will be the collection of A dash? Then can you tell me कि if we have a matrix A
which is collection of all the aij. तो a dash में क्या कलेक्शन होगा? a dash का कलेक्शन क्या होगा? बोलो। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे इसका पोजीशन कितना है? इसका पोजीशन कितना है? A12 A12। अच्छा, ट्रांसपोज में इसका पोजीशन कितना आ गया 2 का? A21 तो क्या आपने किया यहाँ पे? AJI AJI means you interchange the row into column. Okay, यहाँ पे 1 और 2 था, यहाँ पे उसी एलिमेंट का पोजीशन 2 और 1 हो गया. Means if you have to find out the transpose of the any element or transpose not any element, transpose of the matrix, okay, what you have to do? You have to just convert their position. Okay, means like this. Means now you have to collect all the element like this AJI. मतलब फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो. मींस जो आपका एलिमेंट यहाँ पे A32 का रहेगा वही यहाँ पे आपको A23 पे दिखेगा. दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स में दे रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. सपोज वी हैव A matrix as A, B, C, D, A, B, C, D, and the B matrix as 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Now, if I have to find out A plus B dash, then can we write on this will be equal to what? कितना होगा? पहले A plus B निकाल सकते हैं. What will be the A plus B, guys? A plus B कितना हो जाएगा? The A, B plus 1, A, B plus 1. After that, C plus 2. C plus 2. And D plus 3. So we have the matrix A plus B. Now I have to take the transpose. It means that we have the matrix A plus B like A, B plus 1, C plus 2, and D plus 3. Okay, now I have to take the transpose of this. So I will get this equal to the first row first column बना दीजिए A, B plus 1, second row को second column बनाइए तो C plus 2 and D plus 2. So this will be the answer. Yes, this will be the answer. But if I do like D this, plus 3 है. D plus 3, okay, D plus 3. Now if I do like this, suppose I find A dash from here. तो A dash कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? A is A B C D. What is A dash? The first row AB है, उसको कॉलम बना दो AB, and the second row CD है, उसको कॉलम बना दो second column CD. Clear? Now if I find out B dash from here, for the given matrix, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 2, 3 are there. So first row first column means 0, 1, second row second column means 2, 3. Then what will get? Now if I add A dash plus B dash, then what will get? Just check that. We'll get A. Then after that we'll get C plus 2. Okay, what here? B plus 1 and D plus 2. D plus 3. So can we say that this is also equal to this? It means that can we say that here A dash, sorry, A plus B dash, okay, is equal to A dash plus B dash. And similarly we can apply for the negative. Yes, similarly we can apply for the negative like A minus B whole dash will be equal to A dash minus B dash. So this is the first property of that transpose of the matrix. Clear? The first property of the transpose of the matrix. Basically, whenever you have to talk about transpose, in that matrix transpose, basically आपके जो दिमाग में आना चाहिए that rows has to convert into column and column has to convert into row. This is the basic meaning of the transpose. Nothing else. You have to remember that. Means basically हम लोग क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगा करके देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ. अभी आपके पास यहाँ पे A B C D है और यहाँ पे क्या है A, मतलब हमने इस एलिमेंट को फ्लिप कर दिया इधर और इस एलिमेंट को फ्लिप कर दिया इधर. मींस हम क्या करें कि मिरर इमेज ले रहे हैं डायगोनल के अबाउट. यस नो, यही तो कर रहे हैं. डायगोनल के इधर का एलिमेंट इधर और इधर का एलिमेंट इधर हो जा रहा है. दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांसपोज. जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसका ट्रांसपोज इधर दिया गया है तो 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे उल्टा हो गया.
2 ऊपर चले गया 1 इधर, मतलब यहाँ हम क्या करें, मिरर इमेज एक प्लेस करके ले लें, बस दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोज। इसके अलावा आपको ज्यादा उसमें दिमाग में नहीं रखना है। द सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू द बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, दिस इज द रिवर्स। ओके, आप कैसे निकालेंगे इनको हम प्रूव करके एक बार दिखा, लेट्स एनी एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2 and the 0 1, okay, and the b is equal to, guys, is there any background noise? Yes or no? 0 2 3 1, guys, is there any background noise or not? No, sir. Okay, so if I talk about the a b, okay, a b, so the first row first column कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, तो 0 and plus 2 into 3 6, this element will be 6, the first row second column, so 2 plus 2 that will be the 4, 2 plus 2 that will be the 4, yes, yes. So first what you have to do, a is given, b is given, or we can consider any matrix, okay, so we can find out a b here from here, उसके बाद हमने ट्रांसपोज यहाँ पे लिया, फिर उसके बाद हमें लेफ्ट साइड हमने फाइंड कर लिया, राइट साइड प्रूव करना है। For that, I will first take the transpose of the B matrix, then I will take the transpose of the A matrix, and after that, when you multiply this, you will get the same, this matrix and this matrix. So, if the left side, so right side is same, we can say that left side is also same. So, A B dash equal to A dash B dash, and here we can say that this is a second property, important property of the matrix, or we can say transpose of the matrix.